Now let us start with exercise 15.1, question number 1. First part, it says probability of an event E plus probability of the event not E is equal to dash. Now let us understand this with the throw of die. Now in a throw of die, if we consider the happening of an event as getting an even number, अब थ्रो ऑफ डाइज में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, उसमें से इवन कौन से होते हैं? 2 4 and 6. So probability of getting an even number is 3/6 which is equal to 1. तो ये आपके पास हो गया बेटा 3 probability of E is equal to 1/2. नाउ अगर हमने इवेंट के होने का कंसिडर किया है इवन नंबर, तो बाकी बचे कौन से हैं? वो ऑड नंबर्स हैं. सो नेक्स्ट नॉट ई क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई विल बी गेटिंग एन ऑड नंबर. दोज आर 1 3 and 5. So probability of E dash is equal to 3/6 which is equal to 1/2. तो P of E और P of not E, that means probability of happening of event, that means probability of getting an even number, and probability of not happening of even number is equal to 1/2 plus 1/2 equal to 1. Beta, it is not necessary that it will always be 1/2 plus 1/2. It can be 1/4 plus 3/4 which is equal to 4/4 which is equal to 1. लेकिन हमेशा जो probability of E plus probability of not E हमेशा 1 होगा. Now let us come to second part. The probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called dash. Let us again understand this with the help of example of a throw of die. Suppose we consider the event as getting a number 7. So probability of getting number 7 is equal to 0 और 0/6. जब नंबर 7 डाइस में होता ही नहीं है तो उसके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं. So that is called as impossible event. Now third part, the probability of an event that is certain to happen is dash. Such an event is called dash. Again in a throw of die, we see that if we consider the event as getting a number less than or equal to 6. अब सभी नंबर्स या लेस देन और इक्वल टू 6 होते हैं, या तो 1 वो लेस देन है, 2 लेस देन है, एंड व्हाट इज 6? इट इज़ इक्वल टू 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 इज 6/6. आप जब भी थ्रो करोगे कोई एक नंबर 6 या 6 से लेस आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1. Such an event is called sure event. Coming to fourth part, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is. बेटा जो different possible event होते हैं एक experiment के, या उसको हम बोलते हैं elementary events. So here the elementary events in the throw of die are 1 2 3 4 5 and 6. इन्हीं में से कोई नंबर आएगा. So probability of 1 is 1/6. अगेन probability of getting the number 2 is again 1/6 क्योंकि एक ही 2 है उसमें. इसी तरह इन्हीं नंबर्स में केवल एक ही 3 है, तो probability of getting the number 3 is also 1/6. सिमिलरली सपोज हम 6 लेते हैं, एक ही 6 नंबर है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 इज ऑल्सो 1/6. तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. सो सबका जब हम सम लेंगे तो इट इज़ 1/6 6 टाइम्स, सो विच इज़ इक्वल टू 6/6, सो 1. सो हेयर द सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1. Sum of probability of elementary event is always 1. Fifth part, the probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to dash. बेटा ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ that probability always lies between 0 and 1. So we say that P of E is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. So you can note down the answers बेटा. Now let us start with question number 2. It says, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. First part, a driver attempts to start a car. The car starts or does not start.
बेटा यहाँ पर कार के स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि कार के न स्टार्ट होने के चांसेस. द कार विल नॉट स्टार्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस ओनली. सो द both the possible outcomes are not equally likely. Second part, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Now beta, here the person playing is a player of basketball. So his shooting the shot is more, his chances of shooting a shot is more than missing the shot. So again the possible outcomes are not equally likely. Third part, a trial is made to answer a true-false question. The answer is right or wrong. Beta, the two options of answers are given, either right or wrong. So any one can be true only. So the options are equally likely. Outcomes are equally likely. Fourth part, a baby is born. It is a boy or a girl. Again, we know that when a baby is born, we guess that it will either be a boy or a girl. So both the chances are equally likely. Now coming to question number 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the which team should get the ball at the beginning of a football game? Now why it is considered fair? Because both the possible outcomes of tossing a coin are equally likely. या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने कुछ भी आ सकता है, तो दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं. Now coming to question number 4, which of the following cannot be probability of an event? बेटा here फर्स्ट पार्ट में 2/3 है, लेस देन 1 है, इट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो -1.5 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, इट कैनॉट बी. थर्ड पार्ट है परसेंट. यहाँ पर परसेंट के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, अगेन इट इज़ पॉसिबल. देन लास्ट 0.7, अगेन इट इज़ लेस देन 1. सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट. सो इट प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव. सो बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है. Now coming to question number 5, if probability of happening of an event, that is P of E, is equal to 0.05, what is the probability of not E? अब हमें ये पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में कि probability of E प्लस probability of not E 1 है. इस फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करें तो probability of E हमें 0.05 दिया हुआ है, तो probability of E की जगह हम 0.05 पुट करेंगे, तो probability of not E क्या आ जाएगा, 1 माइनस probability of E. तो 1 माइनस 0.05 विच इज़ इक्वल टू 0.95.